Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So in today's lecture we are going to understand what is separated sets in topology. So in separated sets the definition is let x comma tau be a topological space and two non-empty subsets, that is A and B, of capital X said to be a separated if and only if. Let's see, the condition is very simple. For this topological space, when you take two non-empty subsets A and B of this topological space, then condition is A intersection B closure is equal to phi and A closure intersection B is equal to phi, or we can say that union of both is equal to phi. So this is a very general condition for the separated sets. So what is the application of these separated sets? Like if you take the usual metric space or usual space RU, and you can take any open sets, like I take one or two open sets. Okay, so this is an example for this separated set usual topology के साथ. Let 1 and 2 first and this is A, okay, and the B1 is these your 2, 3. Okay, कोई set ले लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, and then you try to find out that what A closure find out करना है हमें. So A closure is what? A closure is the 1 and 2, okay, and the B closure is 2 and 3, right? So if you take the intersection of A closure intersection B closure, A intersection B closure with the definition union of A closure intersection B, that will be your phi. Okay, so this is the condition that going to be satisfied with regarding to the usual space and with these two your sets, okay, that you have taken. You can check with another sets that you can take, you can take open set 1 and 2, closed in 2 and 3 can even to check out, and there are many examples that you can take. So let's go to the next thing, and that is your. सो गाइज हम अब आगे डिस्कस कर लेंगे इस पे एक बेस्ड थ्योरम, ठीक है. तो हाँ, एक और चीज़ आपको बतानी है कि जो सेपरेटेड सेट्स हैं, दीज आर व्हेन यू टॉक अबाउट सेपरेटेड सेट्स, सो यू हैव टू टेक अ डिसजॉइंट सेट्स, ओके. सो जब आप डिसजॉइंट सेट्स लेते हैं, मीन्स आपको क्या लेना पड़ेगा, डिसजॉइंट सेट्स लेना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके जो भी डिसजॉइंट सेट्स हों वो सेपरेटेड हो, ठीक है. यानी कि वाइस वर्सा कंडीशन जो होगी वो फॉलो नहीं करती है, ठीक है. तो सेपरेटेड सेट्स जो होते हैं वो हमारे डिसजॉइंट होंगे, लेकिन डिसजॉइंट सेट्स जो होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि सेपरेटेड सेट्स हों. ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अलग से नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है. तो ये एक थ्योरम है जो हम इस थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. ये थ्योरम क्या कह रही है, ए इज़ अ डिस्कनेक्टेड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स. ओके, so when A is disconnected, when A is the union of two non-empty separated sets. So how to solve, ठीक है, देखते हैं. पहले क्या है, डेफिनेशन क्या कर रही है कि A is disconnected, right? So what we have to do here, we have to take suppose या let करके चलना है कि A is disconnected, okay. So if A is disconnected then the condition would be connected, okay. So let A is disconnected, then by definition of disconnected, and that is that there exist two non-empty sets. You can take any set like G and H, okay, and that is subset of capital X, okay. I hope it is clear from here the definition of disconnected. So A is disconnected and you can take, there exist two empty sets G and H, subset of X, and that is such that G union of H is equals to A, okay. And you can say also G intersection H closure equal to phi, or not or, and यहाँ पे यूज होगा G closure intersection H is equal to phi. So you can use this condition, right, with disconnected sets, and you know that disconnected sets are
separate disjoint sets are separated sets. So it means that G and H here are two separated sets. Okay, are two separated sets. So G union of H is equals to A. Okay, this is the condition that G union H is equals to A. So let's move towards ahead from this definition. Okay, you can note down here these terms and आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं इसके आगे. सो आप इसका कन्वर्सली जैसे अभी हमने दिखाया वहाँ पे G यूनियन H इज इक्वल टू आ गया A, यानी कि A इज़ द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स. आप इस लाइन को भी लिख सकते हैं कि A इज़ द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स. ये फर्स्ट टर्म था जिसे हमने प्रूव किया. हम नेक्स्ट सेकंड टर्म की तरफ चलते हैं. कन्वर्सली इसका कैसे प्रूव करेंगे. ठीक है, मैं थोड़ा सा और आगे रख कर देती हूँ ताकि हमें थोड़ा प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो कन्वर्सली हम प्रूव करने चल रहे हैं. ठीक है, कन्वर्सली हमें दिखाना है कि A इज़ द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स. जैसे कि अभी मैंने प्रूव किया था, तो उसको हम लेके चल रहे हैं. A इज़ द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स. Okay, so A is the non-empty separated set, union of two non-empty separated sets, and that is G and H. Okay, you can also write that. Then A is equal to G union H, right? And you can also write that G intersection H closure is equal to phi, and G closure intersection H is equal to phi. You can also write this also. Okay, so now what this conclude? This conclude that A is disconnected, right? This conclude that A is disconnected. So if this conclude that it is disconnected, this means that A is the union of two non-empty separated sets or equivalent, right? So if A is the union of, here it exclude that A is the union of two non-empty separated sets, empty separated set. So that means what? It includes that A is connected, right? So here A is, we can say that connected, and if it is connected means A is not the union of two non-empty separated sets. So if, अब आगे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे इसको थोड़ा सा आगे से. ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको पॉज करके. ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ये कह रहा है A इज़ द कनेक्टेड यहाँ से. ठीक है, तो A इज़ कनेक्टेड इफ, so if A is connected means A is not the union of, A is not the union of two non-empty separated sets. Two non-empty separated sets. So what? So if you take C be non-empty, be a non-empty family of connected subsets of topological space. Here you have to understand that if you take C be a non-empty family of connected, okay, connected subsets of a topological space, right? So what? So then you can say that it is the union of A such that A belong to C. ये हम कह सकते हैं, यानी कि this that is connected, right? ये connected, so it means that if and only if this condition only satisfy, if and only if, I write here, if and only if no two members of C are connected, right? Then this condition will satisfy, are connected. Sorry, separated लिखना था मुझे. ओके, separated. ठीक है, तो ये एक चीज़ का प्रूफ था आपका. ठीक है, यानी इफ़ यू टेक दैट A is connected, so it means A is not the union of two non-empty separated sets.
सो इफ़ यू हैव टू टेक सी, एक नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ कनेक्टेड सबसेट्स ले रहे हो टोपोलॉजिकल स्पेस का, देन यू कैन राइट दिस कि दैट इज कनेक्टेड, राइट. बट if and only if this condition satisfied, if no two members are separated, right, then is what? If there is no two members of C are separated, that means A is not connected. Okay. तो ये थी डेफिनेशन, ये थी सेपरेटेड सेट से डेफिनेशन उठा करके आपको यहाँ पे पुट करनी है, और आपको ये समझना है कि दैट इज कनेक्टेड और नॉट. इफ दिस इज नॉट कनेक्टेड, देन A is not the union of two non-repeat separated sets, and if it is disconnected, then it is the union of two non-repeat separated sets. तो ये डेफिनेशंस थी, इसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से. थैंक यू सो मच वॉचिंग मी. कोई क्वेरीज होंगी तो प्लीज़ आप कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है. आई विल डेफिनेटली टेक इट. एंड आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप टोपोलॉजिकल स्पेस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हमें बता सकते हैं कि मैम इस वीडियो इस पर चाहिए हमें, ठीक है. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट आउट. सो थैंक यू सो मच.